बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the second lecture of the poem The Naming of Cats. Listen carefully. But I tell you, a cat needs a name that's particular, a name that's peculiar and more dignified. Else, how can he keep up his tail perpendicular, or spread out his whiskers, or cherish his pride? Of names of this kind, I can give you a quorum, such as Mancostrep, Coxo, or Coricopet, such as Bombalorina, or else Gellilorum. Names that never belong to more than one cat, but above and beyond, there is still one name left over, and that is the name that you never will guess, the name that no human research can discover, but the cat himself knows and will never confess. When you notice a cat in profound meditation, the reason I tell you is always the same. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought of the thought of the thought of his name, his ineffable, affable, if ineffable, deep and inscrutable singular name. But I tell you, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, a cat needs, एक बिल्ली को ज़रूरत होती है, a name, एक नाम की, that's particular, जो ख़ास हो, a name, एक नाम, that's peculiar, जो अजीब हो, and more dignified, और ज़्यादा बावकार हो, ज़्यादा स्पेशल हो, else, वरना how can he keep up his tail perpendicular, कैसे वो अपनी दुम सीधी रख पाएगा, or spread out his whiskers, या कैसे फैलाए अपनी मूंछें, or cherish his pride, या अपनी फख्र को एंजॉय करे. Of names of this kind, इस तरह के नामों का, I can give you a quorum, मैं आपको एक ग्रुप दे सकता हूँ. मतलब इस तरह के नाम मैं आपको बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ. quorum means group, such as Mancostrep, Coxo और Coricopet, जैसा कि Mancostrep, Coxo या Coricopet, such as Bombalorina or else Gellilorum, जैसा कि Bombalorina या Gellilorum. Names that never belong to more than one cat, ऐसे नाम जो कभी एक से ज़्यादा बिल्ली की ना हो, but above and beyond there is still one name left over, लेकिन सबसे बढ़कर अब भी एक नाम है, that is left over, जो बाकी रह गया है, and that is the name that you never will guess, और ये वो नाम है जिसे आप सोच भी नहीं सकते. The name that no human research can discover, नाम जिसे कोई इंसान ने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया, जिसे किसी ने अभी तक मालूम नहीं किया. But the cat himself knows, लेकिन बिल्ली खुद जानता है, and will never confess, और कभी मानेगा नहीं. Confess means मानना.
When you notice a cat in profound meditation, profound means gehra and meditation means सोच. When you notice a cat in profound meditation, जब आप बिल्ली को देखें गहरी सोच में, द रीज़न, इसकी वजह, आई टेल यू, मैं बताता हूँ, इज़ ऑलवेज द सेम, हमेशा एक ही होती है. हिज माइंड इज़ एंगेज्ड, उसका जहन मसरूफ़ है. इन अ राप्ट कॉन्टेम्पलेशन, गहरे सोच व फिक्र में. राप्ट मीन्स गहरे एंड कॉन्टेम्पलेशन मीन्स सोच व फिक्र. हिज माइंड इज़ एंगेज्ड इन अ राप्ट कॉन्टेम्पलेशन, उसका जहन मसरूफ़ है गहरे सोच व फिक्र में. ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, सोच पर सोच पर सोच पर अपने नाम की. मतलब गुमसुम रहता है अपने नाम के बारे में. हिज इनएफेबल, एफेबल, उसकी नाकाबिले बयान, काबिल बयान. If an ineffable, if an ineffable means the name that the cat thinks, एक नाम है जिसके बारे में बिल्ली सोचती है. डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, डीप मीन्स गहरा एंड इंस्क्रूटेबल मीन्स ना जानने वाला. डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, बहुत ही गहरा और ना जानने वाला एक नाम. Students, this was the second lecture of the poem The Naming of Cats. I hope you understand. Now your homework. Listen carefully. When a cat is in profound meditation, what is it thinking about? Listen again. When a cat is in profound meditation, what is it thinking about? Listen carefully. When a cat is in profound meditation, what is it thinking about? Students, this is your homework. You have to write the answer of this question. Students, this was the second lecture of the poem The Naming of Cats. I hope you understand. Thanks for watching. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.